सो वेलकम टू पार्ट 2। जो हमारा पहला पार्ट था वो टीचिंग था, तो सेकंड पार्ट है वो है टाइम मैनेजमेंट। आई वेलकम यू अगेन सर। Thank you. So moving on to our first question, what is your daily routine? As you are a teacher, is your routine fixed or is variable? Mostly my routine is fixed. Every day I start my lectures at around 7 o'clock, sometimes 7:20 and 7:50 depending upon the timetable. So first in the morning I take some visiting lectures at Lala Lajpat Rai College, Hinduja College, some day as Wilson College, Navneet College and 2-3 other colleges I am associated with. Then at 10:30 I generally finish my morning session, and afternoon at 11 o'clock I reach my college, where in the morning I was only focusing on teaching. In the afternoon session I am more like administrator. Okay. So I look into the curricular aspect, the co-curricular aspect and the extracurricular activities for the entire BSc-IT, BCA and MCA courses. So very well answered, sir. Moving to our next question, according to your perspective, what is the importance of time? I think nobody can define time. There is no perfect definition for life. There is no perfect definition for time. And therefore, it is one of the most difficult question for today. See, life is the most precious thing, not only on this world, on this earth, but in the entire universe. Life exists only on earth. And whatever time span what we have got is really very precious to us. Right. And therefore we need every single minute, every single second, we need to utilize it. And therefore life, the time that we are spending today, our viewers are giving their valuable time. You and me are sitting today. This time is never going to come back, even at the cost of a mountain of diamonds and gold. Right, sir. So every single minute we need to utilize it. We need to make it useful for ourselves, for our family members, and most importantly the society, because we are because of our society. We are because of the environment. The environment is giving us oxygen. The environment is giving us a habitable conditions where we can live, and therefore every single minute you must try to give something to your society, something to your environment, and most importantly you are doing it for yourself. Because I generally give an example that if you are traveling at a cost of 5 rupees from CST to let's say Baikala, it is not just because of the 5 rupees you are traveling. It is because of the taxpayer who is paying the tax. It is because of the entire railway system which is running. It is because of the government that is providing the facility. It is because of the other people who are traveling with you. So everything is giving us. Now it's our turn to give back to the society. Perfectly said. And therefore time is one of the most precious thing, where if you are sitting alone, mix up with your friends, meet the people in the society, make your time useful. There are hundreds of ways to make your time useful, not only for your personal benefit but also for the society. If you are a student, then invest your time in studies, try to build your knowledge, try to develop your skill set. If you have acquired something, try to give back to the society. Perfect. Because the school, colleges and all the amenities and the facility that we are using, it is because of the society. Perfect. We owe a lot to the society, and therefore students need to come out from their isolated zone. Since many of the students are now living in virtual world, सर, ये क्वेश्चन हमारे लिए सर, हाउ शुड यंग स्टूडेंट लाइक अस यूटिलाइज दैट टाइम? see, as I earlier also told that time is one of the most precious thing that we have got in our life. This lifetime, the life itself is very precious, and our time is a part of our life. Here we are not giving our time, me, you, our viewers also, they are investing a part of their life. Right. And therefore
young students should understand that this time can be very useful to fulfill their dreams and their career. Right. Because a student is not alone. His parents and their expectation, their dreams are associated with them. Perfectly said. Society is expecting from you something. Because you might be the next Albert Einstein. You might be the next inventor. You may give new things to the society. And therefore, if you utilize your time today, it will be beneficial for not only you, but your parents and your society. And therefore, students need to come out from the isolation zone of internet. I'm not telling that internet is a curse. Right. But you need to utilize it for a very in a very positive way, so that it can help you building in your career. Entertainment of course is one part, but अगर शुगर मीठा हो तो हम पूरे कप में और पूरे चाय में सिर्फ शुगर ही नहीं डालते. Right. You need to have a mix of everything. Perfect. And therefore, students should understand that pleasure factor is one thing that every human requires. कि हमें खुशी होती है तो हम वो काम अच्छा करते हैं, लेकिन जिसमें मेहनत होती है, जिसमें हमें हार्डवर्क करना होता है, हमारा मन या हम उसकी तरफ जल्दी नहीं आते हैं. इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी, बट वी नीड टू ओवरकम दिस. अगर यही सोच के किसान अगर हल नहीं चलाएगा तो हम अनाज कहाँ से लेंगे? इसीलिए दुनिया में जितने लोग हैं वो सब अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं. आई थिंक स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी, एंड अ फ्यूचर नीड टू बी वेल इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी. अ फ्यूचर नीड टू बी वेल वर्स्ड विथ व्हाट इज कमिंग अहेड इन नेक्स्ट 50 years. आपके कंधों पे ये सोसाइटी चलेगी, ये देश चलेगा. इसीलिए आपको वो पूरा टाइम अपने स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, और आपके साथ आपके पेरेंट्स के सपने जुड़े हैं, और आपके साथ आपकी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें जुड़ी हैं, और ये नेक्स्ट स्टेज आप ही ले जाने वाले हो. इसीलिए आपका जो आइसोलेशन है ये ख़त्म करना पड़ेगा. आपको सोसाइटी में मिक्सअप होना पड़ेगा. यू कैन हैव वर्चुअल फ्रेंड्स, दैट्स अ गुड थिंग, बट दैट इज सेकेंडरी. डोंट मेक इट प्राइमरी. राइट. आपके 1000 फॉलोअर्स है, लेकिन आप अपने पड़ोसी को नहीं जानते हो. आप अपने सोसाइटी में नेक्स्ट बिल्डिंग में कौन रहता है उसे नहीं जानते हो. राइट. तो ये जो सोशल आइसोलेशन बच्चों में होता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आई स्टिल रिमेंबर दैट वी यूज्ड टू विजिट एवरीवन्स प्लेस इन समर वेकेशन, विंटर वेकेशन. मामा जी के यहाँ जाने का एक अलग सुख होता था. राइट. अभी बच्चों के अंदर वो उत्सुकता नहीं रही. अच्छा, फिर ऐसे होता है कि जब आप इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा समय बिताते हो, आप सोसाइटी से खुद ब खुद आइसोलेटेड हो जाते हो. ये आइसोलेशन कहीं ना कहीं रोकना होगा. एंड दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द स्टूडेंट्स. टाइम शुड बी इक्वली डिवाइडेड इन फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटी. आपको जो पसंद है वो स्पोर्ट एक्टिविटी. अगर कोई स्पोर्ट एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है तो एटलीस्ट यू कैन गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक. राइट. देन अदर एक्टिविटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, जैसे कि फैमिली के साथ समय बिताना है, फैमिली के साथ बैठना है, उनसे बातचीत करनी है, स्टडीज़ पे आपको टाइम देना है. आई स्टिल रिमेंबर दैट व्हेन वी रीड अ बुक वी ऑब्जर्व मेनी थिंग्स, और बुक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. Nowadays students are mostly going towards answer. They don't read the paragraph and find out the answer. Right. इंटरनेट पे डाइजेस्ट अवेलेबल है. They directly use Google Assistant and try to find out the answer. Try to understand the concept. Find your answers on your own. Develop your own programs. Develop your own codes. और इसमें स्टूडेंट्स का जो समय है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसमें आपको आपका लाइफ पूरा बैलेंस रखना है. 8 hours फॉर स्टडी, 8 hours फॉर योर स्कूल एंड कॉलेजेस, एंड 8 hours फॉर योर पर्सनल वर्क. राइट. सो इफ यू डू दिस इन फ्यूचर, इवन इफ यू बिकम अ प्रोफेशन,
you will be able to adjust yourself. शरीर को आदत है कि जितना उसको आप आराम दोगे उसको अच्छा लगेगा, राइट. लेकिन जितना आप उसको मेहनत करवाओगे वो उतनी मेहनत से, उतनी परेशानी से वो सीखता है और आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है. तो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. So very well answered, sir. Moving to our next question. In 2022, what are the skills she should have in him? As far as IT career is concerned, Yeah. the first thing you need to understand and develop is the logic, because logic is the most important part of any software program, and therefore build up your logic. Try to execute small program codes and do small things. Step by step approach. You don't need to learn rocket science in a day. Right, sir. आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं. Every day you need to improve your logic skill. जैसे हमारे बॉडी के लिए if you eat 2 chapatis per day, तो आपके बॉडी को एक ताकत मिलती है. आपको 200 ml मिल्क मम्मी देती है, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स. तो ये क्या करता है, आपके शरीर को शक्ति देता है. Right. अगर आपने 6 महीने तक अगर दूध नहीं पिया तो क्या ये पॉसिबल है कि 20 लीटर मिल्क आप एक ही दिन में पी लोगे? बस ऐसे ही लॉजिक नीड टू बी डेवलप्ड एवरी डे. आप अपने माइंड का जो सोचने की कैपेसिटी है इसको रोजाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, और ये लॉजिक डेवलपमेंट आपको एआई तक लेके जाएगा, आपको मशीन लर्निंग तक लेके जाएगा, बिग डेटा एनालिटिक्स तक लेके जाएगा. अगर आप अच्छा सोच सकते हो तो आप बिजनेस, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो. यू नीड टू बी अ वेरी गुड थिंकर. राइट. कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर सकते हो. इन फ्यूचर अगर कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए तो ये दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप बड़े इजीली सीख सकते हो, बिकॉज लॉजिक विल नेवर गोइंग टू चेंज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती रहेगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चेंज होती रहेगी, राइट. लॉजिक सेम रहेगा. देयरफॉर स्टूडेंट नीड टू वर्क ऑन लॉजिक. So can we say that, sir, consistency is the key over here? 100%. In logic building, consistency plays a very important role. जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल आपको देके बताया कि जिस तरह हम अपने शरीर को रोजाना डेवलप करते हैं, उसी तरह से हमारी जो सोचने की क्षमता है इसे भी हमें रोजाना इंप्रूव करनी होगी. Very well answered, sir. Moving to our last question. What technical programming languages one should start learning? Like जो न्यूज़ टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं वो क्या फोकस करना चाहिए हमारी यंग जनरेशन को? See, if a student want to pursue his career into web designing and web development, then full stack development is required. Right. Because nowadays most of the program codes are ready. We are into the world of integration. तो स्टूडेंट को अभी बहुत ज़्यादा स्क्रैच से कोड डेवलप नहीं करना. Even if you want to develop a website, you can develop in just 2 hours. So website designing, program development has become easy. So what I feel is students should at least learn Python, R, along with a database. And apart from this, student should start from C language, because until and unless you understand the pointers, you won't be able to understand the concept of data structures, operating system, and the other aspect of the program. You will be surprised that the Toynbee index of programming languages, C language still stands at the 3rd position, despite of the one of the oldest language. So why C is still relevant today? Because pointer gives a student a new age of thinking how system works internally, and if he is able to understand how the system is working internally, he will be able to design all the applications. Right. So I guess हमारे सारे क्वेश्चन जो आंसर्ड हो चुके हैं. So thank you so much again for your valuable time, sir. I hope you like this video. So please share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.